Sri Nagpur Gujarati Mandal is a century-old organization. It is known for its social commitment. In 1969, the Mandal established VM Vasant Commerce, JM Thakur Arts and JJ Patel Science College to impart the higher education among the poor and suppressed class. The great souls behind the glorious history of the college are late Shri Shantibai Badani, dynamic principal late Shri Ayachit. Presently, the college is leading towards excellence under the able leadership of Advocate Shri Chandrakant Thakur, Honorable Chairman Shri Nagpur Gujarati Mandal. Let's know what he envisions about the college. Great and outstanding personalities. I am proud because it is built on great and noble tradition of giving education to less advantaged people of society and raise their standard of living and give them place of pride in society. I am proud because we have never allowed institution to be commercialized. I am proud because along with imbibing human values in staff and students, we have assimilated modern technologies and modern methods of teaching. I am proud because the entire staff under the leadership of our principal, Muralidhar Chandekar, has given their heart and head for the welfare of the student in raising the standard. Our thirst for progress is unending. In the modern time of global competition, the importance of English language cannot be undermined, and it is necessary that our students must be proficient in communication skill. To improve the standard of English language and communication skill amongst our students, our head of the department for different languages have established most modern and up-to-date language laboratory, and for which I congratulate them. For increasing the employability of our students, it is necessary that they must go beyond the syllabus and fulfill the needs of employer. Keeping this in view, we are giving training to our students in various practical courses free of cost or at very nominal cost. We train them in banking procedure, computer training, accounting, taxation, marketing, communication, correspondence and the like. We provide them the facility of computer and networking, etc. We hold seminars, workshops and lectures of eminent persons in the field. Our teachers are also encouraged to improve their qualification and carry out self-improvement courses. In short, we the management, staff and students all are on a continuous journey of education so that our young generation can improve their quality of life, become good human beings and good citizens of the world community. I congratulate the entire staff for the efforts they are putting jointly without any monetary expectation for the cause of education. Thank you so much. The Department of Languages has been conducting various activities to make the students communicate effectively to face the challenges of globalization. Celebration of Language Days, Wall Magazine, Student Seminar, Debate Competition, Essay Competition, Film Club, Readers Club are the regular features of the department. Library and a digital classroom keep students updated. विद्यार्थ्यांच्या सहज प्रतिक्रिया या शिक्षकांना प्रेरणादायी असतात. Student from FIJC Science. Time is ours, not we are of time. That's what I got to learn while learning in this college. Being a student of VMV Commerce, JMT Arts and JJP Science College, I hold a proud privilege. The college holds a good reputation in the city and it's one of the best science colleges in the central Nagpur. Being a student from English medium school, I feel happy that the college is very keen for the promotion of English language. The faculty members of the English department can be considered as the laureates of English. To continue the promotion of English language for the freshers of the year, the college decided to hold an English event with activities such as debate, skit, play, PPT presentation and many more that grabs the keen interest of these students. At last, I would say that the college brought us forward from a safer past, made us own the present to have the limitless possibilities of the future. અહીંયા આ ભાષામાં બહુ બધી શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ થાય છે અને ભાષાનું પ્રસાર અને પ્રચાર પણ થાય છે. આગે તમને हमारी विभाग अध्यक्ष इला शुक्ला मैडम बताड़શે. તકલીફની વાત ભાષા અને સંસ્કૃતિ એવા સંકળાયેલા છે, એક જાય તો બીજી જાય.
ભાષા સંસ્કૃતિનું તટસ્થ વાહન નથી, એની સાથે ઓતપ્રોત છે, વણાયેલી છે, એક થયેલી છે. હવે હું તમને એક વાત તરફ ધ્યાન તમારું ખેંચવા માંગુ છું. ભાષા જાય એનું દુઃખ થાય, ભાષા અને સંસ્કૃતિ જાય તો જાણે માતૃભાષા અને માં ખતમ થઈ ગયા છે એની વેદના ગુજરાતીઓને થવી જોઈએ. આંખ એ આપણી માં છે તો ચશ્મા એ બીજી ભાષાઓ છે. આંખ વિના ચશ્માનું શું કામ? આવો હું તમને કહું કે જો જે ભાષાનો પ્રભાવ ઓછો થાય, જે ભાષાનું જોર ઓછું થાય, એના માટે સૌથી વેદના એ છે કે જે ભાષા સંસ્કૃતિમાંથી આવી છે એની સાથે એકરૂપ થયેલી હોય છે. માટે એ જો જાય તો એ સંસ્કારોને ઘસડીને લઈ જાય. ભાષા ઉપડે તો પોતાનો સામાન લઈને ઉપડે, અને ભાષાનો સામાન એટલે સંસ્કૃતિ. ગુજરાતી ભાષા જાય તો ભારતીય સંસ્કૃતિ પણ સાથે લઈ જાય. પ્રત્યેક ભારતીય ભાષા ટકેલી રહે. जय जय गरवी गुजरात, जय महाराष्ट्र, जय भारत. अमृतातेही पैजा जिंके या शब्दात 13व्या शतकात श्री ज्ञानेश्वरांनी मराठी भाषेची थोरवी सांगितली. आज 21व्या शतकातही आपल्या साऱ्यांवरच मराठी भाषेच्या संवर्धनाची जबाबदारी आहे. या राजभाषा मराठीला वैश्विक भाषा इंग्रजीसोबत सन्मानाने बसवण्याची जबाबदारी आमच्या साऱ्यांवरच असली तरी आमच्या महाविद्यालयातील मराठी विभाग या दिशेने सतत प्रयत्नरत आहे. याच विषयावर अधिक प्रकाश टाकण्याकरता आपल्यापुढे प्रस्तुत आहे मराठी विभाग प्रमुख प्राध्यापक अरविंद युगंधर. नमस्कार, मी प्राध्यापक अरविंद युगंधर, मराठी विभाग प्रमुख या नात्याने आपणाशी हितगुज करू इच्छितो. मराठी भाषा ही महाराष्ट्र राज्याची प्राचीन भाषा आहे. खरे तर मराठी भाषेचे अध्यापन म्हणजे आपल्या मातृभाषेचे अध्यापन, आणि हे अध्यापन प्रत्येक मराठी माणूस पहिल्या वर्गापासून तर महाविद्यालयीन स्तरापर्यंत करीत असतो. परप्रांतीयांचा लोंढा पोटाची खळगी भरण्यासाठी महाराष्ट्रात दाखल होत असल्यामुळे भाषिक संघर्ष वाढतो आहे आणि मराठी भाषेला अवकळा प्राप्त होत आहे. या आपल्या मराठी भाषेचे संवर्धन करण्यासाठी विद्यालयीन तसे महाविद्यालयीन मराठी भाषेच्या शिक्षकांकडून शासनाच्या आणि समाजाच्या अपेक्षा वाढत आहे. आज मराठी भाषेच्या सध्या स्थितीबद्दल, तिच्या वर्तमान स्वरूपाबद्दल विविध व्यासपीठांवरून चिंता व्यक्त केली जात आहे. काही संशोधकांनी तर असा निष्कर्ष काढलेला आहे की इसवी सन 2020 पर्यंत मराठी भाषा ही केवळ महाराष्ट्रातील घरांमध्ये बोलावयाची भाषा राहील. या धक्कादायक निष्कर्षाचा विचार करता मराठी भाषेच्या भवितव्याविषयी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. आम्ही मराठी माणसं रोजच्या व्यवहारात रिझल्ट लागला, मार्कशीट मिळाली, ग्रँट मिळाली, मेसेज मिळाला, फ्रेश झालो, सिलेंडर संपलं, TV ऑन केला, फॅन सुरू कर, बाथरूमला चाललो, बेडरूममध्ये आहेत, ॲडमिशन झाली, स्कॉलरशिप मिळाली, युनिव्हर्सिटीमध्ये गेलेत, टाइम टेबल लागला. या इंग्रजी शब्दांना मराठी क्रियापद जोडले की मराठी भाषेचं लेखन आणि संभाषण घडतं. जागतिकीकरणाच्या झंझावात संपूर्ण विश्वाला जवळ आणणारी भाषा म्हणून इंग्रजी भाषेचा वापर होऊ लागला. माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात ज्ञानाचा स्फोट होऊ लागला. इंटरनेट, ईमेल, ई-कॉमर्स या साधनांमुळे इंग्रजी भाषेचे ज्ञान आवश्यक वाटू लागले. हे जरी खरे असले तरी मराठी माणूसच आपल्या मातृभाषेकडे दुर्लक्ष करीत आहे, ही आजची शोकांतिका आहे. हिंदी विभाग की प्राध्यापिकाएं अनिवार्य हिंदी एवं हिंदी साहित्य के अध्यापन द्वारा विद्यार्थियों में राष्ट्रीय मूल्यों एवं नैतिक मूल्यों के निर्माण हेतु बड़ी निष्ठा से कार्यरत हैं. हिंदी विभाग की अन्य गतिविधियों की जानकारी आइए सुने विभाग प्रमुख प्राध्यापिका आभा सिंह से. हिंदी विभाग में आप सभी का स्वागत है. हिंदी विभाग एक तरह से देखा जाए तो अनिवार्य हिंदी और हिंदी साहित्य दोनों को साथ लिए चलता है.
यह विभाग समर्पित है अपने विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति कौशल क्षमता का निर्माण करने के लिए। अब अभिव्यक्ति कौशल क्षमता की अनिवार्यता इसीलिए है क्योंकि वर्तमान में भाषा की अहमियत या कहे कि भाषा को लेकर के संघर्ष जो बढ़ता चला जा रहा है, उस संघर्ष में भी हिंदी को एक इस दृष्टि से देखा जा रहा है कि इसमें रोजगार की संभावनाएं कितनी हैं। रोजगार की संभावनाओं को स्पष्ट करने के लिए अधिक आवश्यकता नहीं है। हम लोग यदि पत्रकारिता को ले लेते हैं, यदि मीडिया को ले लेते हैं, तो आप खुद ही जान लेंगे कि हिंदी कितनी ज़्यादा सक्षम और सक्रियता से वर्तमान में रोजगार के क्षेत्र में बढ़ती चली जा रही है। खैर, इन सब बातों को छोड़ते हुए विद्यार्थियों के लिए को लेकर के समर्पण की यदि बात करें तो विभाग की ओर से कई सारी ऐसी गतिविधियां चलाई जाती हैं जो पाठ्यक्रम के अलावा विद्यार्थियों के अन्य कला कौशल को निर्मित करने में, उन्हें अभिव्यक्ति देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि यदि सृजनात्मक लेखन की बात करें तो सृजनात्मक लेखन के लिए आपको काव्य और गद्य दोनों ही रूपों में विद्यार्थियों को कैसे तुरंत विषय देकर के उसका प्रस्तुतिकरण करना है। एंड इन सारी बातों में विभाग समय समय पर कुछ एक शीर्षक, कुछ एक विषयों को लेकर के विद्यार्थियों से लेख प्रस्तुतिकरण करवाता रहता है, जिनके माध्यम से विद्यार्थी उन गुणों का विकास कर पाते हैं जो केवल पाठ्यक्रम से बंधे रहने के द्वारा नहीं हो सकता है। महाविद्यालय के दायरे में सीमित न रह करके समय समय पर अंतर महाविद्यालयीन गतिविधियों में भी विद्यार्थियों को जोड़ा जाता है। जैसे कि पत्रकारिता के संदर्भ में हमने पिछले ही वर्ष एक डिप्लोमा कोर्स करवाया है। अनुवाद कला के विषय में विद्यार्थियों ने जाना है। मीडिया का योगदान भाषा के साथ कैसा होता है, इस संदर्भ में भी विद्यार्थियों को बतलाया गया है। तो केवल महाविद्यालय तक विभाग समर्पित नहीं है। जहाँ जहाँ विद्यार्थियों के सुसुप्त गुणों की अभिव्यक्ति, उनकी निर्मिति की बात होती है, वहाँ पर विभाग सक्रियता से विद्यार्थियों का सहभाग करवाता है और उनके चतुर्मुखी विकास के लिए समर्पित है। Department of English is the strong pillar of the language department. Let's know about the department straight from the HOD, Dr. Kiran Jhan. Department of English. Here, along with compulsory English paper, we offer English literature at undergraduate level. Ours is a postgraduate department. We have MA English literature also. As all of you know, English today is the global language, the lingua franca, the language of power corridors, the language of go-getters. We want a holistic growth of our students in the classrooms. Syllabi bind us. We carry out various activities to supplement the syllabus. We have English Literary Society, which carries out different activities like debates, elocution, quiz competitions and essay competitions. We have Listeners Audio Club meets where students listen to songs, they are given printouts and they read from these printouts and sing the songs. The music and informal atmosphere overcomes their fear of speaking English. In film club meets, students watch English movies. We choose movies which have the subtitles also so that the students can read the dialogues while watching the movies. In student seminars, at times we choose topics other than the syllabus. Wall magazine brings out the activity of the creativity of our students, their original contributions, poems, essays, short stories, jokes, along with their favorites grace the magazine. In storytelling club, they tell stories, it overcomes their stage fear. In readers club, we try to supply reading material which is sadly lacking in the homes of some of our students. We use old magazines donated to us for this purpose. We request the students to read daily at least for 10 minutes from these magazines. In interface, we invite a guest and let the students have a go at him, ask him her questions, interview him, her. This gives them confidence in spoken English and interpersonal skills.
We hope our efforts bear fruits. We wish VMBians success in